तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमनली आस्क्ड Vue.js इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस फॉर बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में भी पूछे जाते हैं। इवन तो फॉर एडवांस स्टार्टिंग में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्टार्टिंग इससे ही होती है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू पास डेटा बिटवीन व्यू कंपोनेंट्स। तो हम अलग अलग डेटा जो रहता है वो कंपोनेंट्स में कैसे पास करें। So the answer for this is passing data between view components can be done in several ways. तो अलग अलग तरीके हैं, it depends on the relationship between the components. So if we have a parent child relationship, like there are two components which are related as a parent and child, तो we use props to pass data from parent to child. मतलब अगर parent से child में data pass करना है तो we have to use a props, and we have to use event emitter which is noted by dollar emit. तो dollar emit एक कीवर्ड है, उससे वो यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ करेंगे इन केस ऑफ वी हैव टू सेंड फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, तो दैट इज़ द वन वे। एंड फॉर सिबलिंग कंपोनेंट्स, मतलब द टू कंपोनेंट्स आर नॉट रिलेटेड एज अ पेरेंट चाइल्ड और चाइल्ड पेरेंट, अलग अलग कंपोनेंट्स है, तो वी हैव टू यूज अ शेयर स्टेट मैनेजमेंट लाइक अ व्यू एक्स। और अभी नया एक आया है, पिनिया करके आया है फॉर व्यू 3। सो दो स्टेट मैनेजमेंट वी हैव टू यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट प्रीवियस वैल्यू ऑफ एनी प्रॉप्स। तो प्रॉप्स की अगर ओल्ड वैल्यू चाहिए तो हम कैसे लेंगे। तो फॉर दैट द आंसर इज टू गेट द ओल्ड प्रॉप वैल्यू वी हैव टू यूज वॉचर। सो व्हेन वी यूज वॉचर वी गेट अ ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू, बिकॉज बेसिकली वॉचर क्या करता है, कीप वॉचेस ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट, कि अगर वो चेंज होता है तो वॉचर फंक्शन विल रन, तो इट विल गिव यू द ओल्ड वैल्यू एज प्लस एज न्यू वैल्यू। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉच एंड कंप्यूटर प्रॉपर्टी। सो क्या डिफरेंस क्या है, तो यूज ऑफ वॉच इज आई मीन बेसिकली द मेन डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर रिएक्टिव डेटा दैट डिपेंड्स ऑन अदर डेटा। सो कंप्यूटर प्रॉपर्टी बेसिकली कैशिंग के लिए यूज होते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है एंड वी हैव टू कैश दैट वैल्यू, वी डोंट हैव टू रन दैट अगेन एंड अगेन, सो दैट टाइम वी यूज कंप्यूटर प्रॉपर्टी। बट देर आर सम स्टेट वी हैव टू कीप आई ऑन दैट, कि अगर कुछ उसका वैल्यू चेंज होता है देन वी शुड रन अ फंक्शन, तो इन दैट केस वी यूज वॉचर। सो कंप्यूटर प्रॉपर्टी कैश्ड बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसीज। ठीक है, एंड दे आर इवैल्यूएटेड ओनली व्हेन वन ऑफ देयर डिपेंडेंसी चेंज। अगर डिपेंडेंसी का वैल्यू चेंज होता है तभी वो रन होता है, अदरवाइज इट विल गिव द ओल्ड वैल्यू ओनली। एंड वॉचर्स अदर हैंड आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग asynchronous ऑपरेशन और मल्टीपल डिपेंडेंट ऑपरेशन whenever a watch the source change। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज ऑफ वी एच टी एम एल। तो वी एच टी एम एल एक ये है Vue.js में। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, डायरेक्टिव बोलेंगे बेसिकली, वी एच टी एम एल इज अ डायरेक्टिव। So the answer for that is VHTML is a directive in Vue.js which is used to render a raw HTML inside an element. So this can be useful when you need to display HTML content coming from a database or any API. तो अगर कोई database से अगर HTML आ रहा है directly, so you directly put that into VHTML and that will be considered as a HTML data, not as a text data or some JSON data. Okay, so that is the use of VHTML. Next question is how to apply CSS tags, I mean CSS to tag inside a VHTML। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि VHTML में HTML मीन्स पास वी हैव टू पास, बट इफ यू वांट टू अप्लाई सम CSS, तो हाउ वी डू दैट। So the answer to that is to style element rendered by VHTML. You can use scoped CSS in the parent component, or you can target those elements using global style CSS or CSS modules. If you need to scope styles more precisely, consider using class names within the HTML content and style those classes in your component. बेसिकली क्या करना है कि जो उसके क्लासेस है, फॉर दैट वी हैव टू गिव द CSS इन स्कोप्ड और इन ग्लोबल CSS। ओके, सो व्हाट आर द अगेन एक मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट डायरेक्टिव्स इन व्यू एंड व्हाट आर देयर यूजेस। So this is a very important question. So there are different directives. Some are commonly used, some are very rarely used. So commonly used are vif, vfor, vbind, vmodel, vshow, von,
ठीक है. So these are the main. So what are the uses of that? That will be the next question. So we if used for conditional rendering. If you want to render some element on condition, तो अगर if else पे अगर कुछ render करना है तो we if use. V4 is used for rendering list of atoms. ठीक है. रेंडरिंग एज इन एक अरे के इस पे लूप करना है तो वी इफ यूज्ड. वी बाइंड again attributes for or props to an expression. It binds the attribute. V model is used to creating two-way data binding on form input element. V show is used for toggling the visibility of element, and V on is used for attaching event. Events के लिए V on use होता है. So the next question is why not to use VIF and V4 together on a same tag. So we in Vue.js we cannot use VIF and V4. So the answer for this is actually V4 has the higher priority and it will run first. So this means the VIF will be evaluated separately for each atom in the loop, which can lead to a performance issue and unexpected behavior. So instead, try करो कि we use it separately, and it is recommended by the Vue official. Next question, important question is vbind and vmodel and what is the difference. So generally vbind is there, vbind. Actually vbind is used to bind one or more attributes for a component prop to an expression. But vmodel is a directive that create two-way data binding on an input, any input like input text in select, text area, radio button, etc. तो डेटा अगर सिंक करना है टू वे बाइंडिंग तो वी मॉडल इज यूज्ड एंड वी बाइंड इज टू एट्रीब्यूट्स अटैच करने के लिए. The next important question is life cycle hooks. What are the life cycle hooks? So in Vue.js also we have life cycle like React and Angular. So the main are created, mounted, updated and destroyed. So these four are there. So created means once the component is created, mounted means once it is mounted, updated is again once the updated, and destroyed means agar component is getting destroyed, so that will be called. So the next question will be like where we can call API, like in created or in mounted. What is the difference? So अगर ये हम created में call करते हैं तो क्या difference है और in mounted में. So API calls can be made in both created and mounted. The choice depends on you. But if data is not required immediately for rendering use, so we use created. If you need to ensure that DOM is fully rendered, because created में DOM पे माउंट नहीं होता. अगर माउंट होने के बाद आपको डेटा चाहिए तो you make use of mounted. So that's the main difference. And what is the ref? So there is a one function ref. So ref attribute is used to register a reference to a DOM element. If you want to access a DOM element directly, so we use attach a ref to that and you get that into your code like using this dot dollar ref. तो वो एक हो गया. तो यही बेसिक क्वेश्चंस थे. हम और एक इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सम एडवांस questions. So these were the basics. In next video we will discuss the advanced one. Okay, thank you. Bye bye.